Hello students, this is Farman Ali. So in this video I will discuss about one of the important topic that is active and passive voice. Okay, so आज हम active and passive voice को आपका understand करेंगे that what are these two things and what we have to do to change them. Okay, so it is one of the important topic which we have to discuss here now. Now come to this part. So firstly we have to understand that what is voice है ना, because you can see that voice means that the person speaks something है ना. So whatever the things which person or the speaker is speaking, so that is the voice है ना. How he or she express anything, तो कोई भी person आपका किस तरीके से चीज़ को express कर रहा है आपका, so it is represented by the verbs. So you can just look here that voice is a characteristics of verbs which indicates the relation of the verb's action to its subject. So we all know that subject does something, means subject performs some action. So if it is performed by the subject, so it means that it is speaking something. So means sentence has a voice, that subject has done a particular task or the action. So this is the thing which we have to understand. So voice can be in two ways. So it can be in active way or the passive way. So on that basis इन लोगों ने आपको क्या करा है that they have divided the voice into the two parts and these are active and passive voice. Now you have to come to this. So I have already told you that voice are of two types. So one is active and another is passive. Now come to the things that what are these two. Just look into this. So you can see in this that there is a distinction or difference between active and the passive voice. So firstly we have to see the active voice. तो सबसे पहले हम active voice को समझेंगे that what does it mean. A verb said to be active voice when it expresses an action performed by its subject. So if verb tells this thing that एनी एक्शन और द टास्क इज़ डन बाय द सब्जेक्ट, अगर कोई भी वर्क आपका सब्जेक्ट के ज़रिए करा जा रहा है आपका, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ब है ना. सो वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. नाउ यू कैन कम टू द पैसिव वॉइस. तो आपके पैसिव वॉइस में आपका वर्ब कब होगी आपका, ए वर्ब सेड टू बी ए पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इट एक्सप्रेसेस is performed upon its subject. So we all know that sometimes that action comes on the subject के है ना बाय द डोर, जिसके ज़रिए कोई काम करा गया है आपका, मीन्स दिस इज अ टास्क विच इज़ डन बाय मी. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दैट द मेन थिंग इज़ द ऑब्जेक्ट. सो वॉट एवर द थिंग्स इज हैपनिंग, सो दैट मेन पार्ट इज़ द ऑब्जेक्ट हियर एंड समथिंग इज़ परफॉर्म्ड. सो परफॉर्मेंस जो है आपका इट इज़ अपॉन द subject in this case. Now you can come to the that what are the ways by which we can change them. So there are some steps which we have to follow. So how we can convert active voice into the passive voice. So there are the some steps which we have to see. So we will talk about one example. सबसे पहले हम example देखेंगे आपका. So what is it about? Just look into this. So you can see that there is a one sentence which is given. तो यहाँ पे आपका एक sentence दिया हुआ है आपका, and we all know that there are the three things in the sentence. हाँ ना, sentence के अंदर तीन चीज़ें होती हैं आपका. One is subject, another is verb, and thereafter what comes, so that is the object part. तो तीन चीज़ें से मिलके आपका sentence आपका होता है. So we have to see that subject and object. So these are the two important things. But verb tells that is it active voice or the passive voice. So verb से पता होता है आपका क्या ये active है या passive है आपका. So you can see that a teacher teaches the students in this. So you can see that the subject is teacher and the verb is that teaches and students is object in this case. So you can see that what they are doing if we are changing it into the passive. तो जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एक्टिव को आपका, सो वी हैव टू जस्ट पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आप ये देख सकते हैं कि एरो क्या शो कर रहा है आपका, द टीचर इज बिकमिंग ऑब्जेक्ट नाउ and the object is becoming the subject now. And you can see that verb is also changed. verb भी आपकी क्या हो चुकी है, आपका चेंज हो चुकी है आपका. so in this you can see that teaches, so now it has become आर डॉट एंड वी यूज बाई. सो जब भी हम चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में, वेन एवर वी चेंज एक्टिव इन टू द पैसिव वॉइस,
So we have to do one thing also, that before putting subject as object in the passive voice we have to put the by also, है ना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, आपका by को हम पुट कर देते हैं आपका। सो इट शोज़ के दैट वर्क, ठीक है, इज परफॉर्म्ड अपॉन द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे आपका अब, ठीक है, वर्किंग क्या हो रहा है आपका, मीन्स आपका हो रही है आपका। नाउ यू हैव टू सी दैट दे आर द सम rules which we have to follow in this. So just look these rules. What are these rules which we have to follow when we change active to the passive voice? जब भी हम active को passive में change करते हैं आपका, तो उसके कुछ rules हैं आपका, and these are based on the tenses. जो tenses हमने पढ़े थे आपका, which are of 3 types, but there are some division of it. So we have to just look into this. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि that there are the some tenses which are given. सो वॉट वी डू इन दिस केस, है ना। तो हम कैसे चेंज करते हैं आपका। सो वी ऑल नो के एक्टिव जब पैसिव में चेंज होता है, व्हेन एक्टिव चेंजेस इनटू द पैसिव, सो सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। बट इन पैसिव वॉइस वी पुट बाई बिफोर द सब्जेक्ट, मीन जो कि आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनना है आपका। सो वी आर पुटिंग ऑब्जेक्ट, बट बिफोर दैट वी हैव टू शो द दैट इट इज़ वर्किंग अपॉन द सब्जेक्ट। तो इसलिए हम बाई का यूज़ करते हैं वहाँ पे। Just take the first one, that is present simple, है ना। So simple present, present simple, both are same. So you can see that there is a one sentence which is given, reporters writes news reports, है ना। So you can see that reporters is the subject, write is the verb, and news reports is the object part. Now when we change into the passive voice में करते हैं अगर हम, so object become subject and subject become object, and verb also changes its form. verb आपकी क्या करती है, अपनी form को change कर देती है आपका। so it is a simple present tense. so in simple present tense what we do, we have to use is, am, are, ठीक है। is, am, are का हम use करते हैं, but it depends upon the ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है आपका। इफ़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ बिकमिंग अ सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना है, इफ इट इज़ सिंगुलर सो वी हैव टू यूज़ इज़, इफ इट इज़ प्लूरल देन वी हैव टू यूज़ आर, इफ इट इज़ ओनली आई देन वी हैव टू यूज़ व्हाट, एम, ठीक है। तो अगर मी है आपका, सो इट मीन दैट वी हैव टू चेंज दैट इनटू द एम, तो हम वहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब आपका रखेंगे आपका। बट द वर्ब चेंजेस इनटू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ना, लेकिन वर्ब जो है वो आपका ऑलवेज थर्ड फॉर्म द वर्ब को आपका रखती है आपका। मीन्स वर्ब विल नॉट बी चेंज, इट विल रिमेन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी आपका। सो यू कैन सी इन दिस, सो इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो वी हैव टू जस्ट डू द न्यूज़ reports, so it is a plural, so news reports are written, so third form, then by we put before that. so means आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका और जो वर्ब है आपका, उसके बीच में हम बाई का, है ना, यूज़ करते हैं आपका in the passive voice, है ना। you can just look in the present continuous tense. if it is a present continuous tense what we do, so the things are same, subject become object, object become subject, but one thing you have to just notice that we use being, है ना। तो हम helping verb के बाद आपका क्या कर रहे हैं, we are putting being, so it can easily, ठीक है, visibly here। तो आप यहाँ देख सकते हैं present continuous में अगर हम show करते हैं आपका, so is, am, are, so will remain as it is. It depends upon the singular and the plural. if your object is singular so we put singular, आपके verb रखेंगे helping verb, but after the helping verb we have to put the being, okay। you can just see the example that Michael is baking a brownie, so brownie, a brownie is being, ठीक है। so and it will also change that baking will not be, so whatever the sentence it is, so आपकी जो verb रहेगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आपका रहती है, दैट्स वाई वी आर जस्ट पुटिंग बेक्ड, सो बेक्ड बाय माइकल। Similarly you can see in the past simple, so simple past में we all know that we use the second form of the verb, the company hired new workers last year, so the main thing is that is the new workers, so new workers, so it is plural, that's why we are putting were, so were hired by the company last year, ठीक है। so in this way that you can see, so past continuous it means was were will come in this, so it will remain was were, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वॉट एवर इट इज़। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वॉज रखेंगे, अगर प्लूरल है तो वर रखेंगे आपका, एंड वी हैव टू पुट बीइंग, ठीक है। सो इफ इट इज़ कंटिन्यूस टेंस सो वी हैव टू पुट बीइंग आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, वेदर इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस और द प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट बीइंग। दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। बट इफ इट इज़ अ केस ऑफ perfect, means present perfect or the
past perfect. So we all know that in present perfect and the past perfect we have to use been. हमें क्या करना होगा उसके अंदर, been को रखना होता है आपका, means after the helping verb we will put been. ठीक है, so that you can just look in this present perfect. So they have already discussed the book. So you can look in this, the book is the object part, now it is becoming a subject. So the book, it is singular, that's why we are putting has. So the book has already डिस्कस. सो इट इज़ थर्ड फॉर्म, सो इट विल नॉट चेंज इट्स फॉर्म्स. तो ये एज इट इज़ रखी जाएगी क्योंकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो. सो इन परफेक्ट टेंस दैट वर्ब इज़ इन थर्ड फॉर्म होती है आपका, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे. दैट्स वाई इट विल रिमेन एज इट इज़. सो द लेटर हैड बीन डिलीवर्ड. सो ही हैड डिलीवर्ड द लेटर. सो लेटर्स, सो इट इज़, सो हैड इज़ यूज विथ सिंगुलर और द प्लूरल वॉट एवर द सब्जेक्ट इट इज़. तो इसमें कोई चेंज नहीं आता आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर. सो ही हैड डिलीवर्ड द लेटर्स, द लेटर्स हैड बीन. सो वी आर पुटिंग बीन इन दिस केस. सो प्रेजेंट अगर कंटिन्यूस का केस है, सो वी हैव टू यूज बीइंग आफ्टर द वर्ब, helping verb, and if it is a case of perfect then we have to add been. Okay, now come to the future simple. So in the future simple you can see that what we are adding. So we are adding be. Okay, so after the helping verb we are adding be. So third form will remain as it is, subject from object, object from subject. So in this way you can see that company will hire new workers. So the new workers will be hired by the company. So these are the some of the rules which we have to understand. On that basis we can change any sentence, means active voice passive voice में अगर हम करना है. सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच टेंस इट इज़. तो वो कौन सा टेंस है आपका, ऑन दैट बेसिस वी कैन ईजिली कन्वर्ट इट. ओके, so there are some of the cases which they have given in this regarding the infinitive and the models. So you can see in the models like she must deliver the letters. So the letters is the object, so it is becoming subject. So the letters, so it remain as it is, so must be delivered. So it is okay, third form. So always third form comes, that's why we are putting it. She, now you can see the case of infinitive also. She has to deliver the letters. So the letters हैव, सो इट इज़ प्लूरल. सो द लेटर्स हैव टू, यू आप देखें यहाँ शी के बाद हैज़ आ रहा है आपका, सो इट इज़ सिंगुलर बट द लेटर्स आर प्लूरल, दैट्स वाई वी आर पुटिंग हैव इन दिस. सो यहाँ पे हम द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड. सो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. If you have any kind of confusion, so you can just discuss with me. So thank you so much. If you have liked this video, so please subscribe my channel and share this video to others. Okay, and please like my video so that I can be motivated and I can make more videos. Thank you so much. Bye everyone.